चलो, so today we will do work of sea waves, then work of ice, and then work of wind. You have done work of river. तो ये नहीं सोचो कि वर्क सिर्फ आप ही करते हो, आप ही पढ़ते हो, आप ही को वर्क मिलता है। ये भी वर्क करते हैं, ये देख लो, सी भी वर्क कर रहा है, आइस भी वर्क कर रही है, सी वेव्स वर्क कर रही हैं, ठीक है, विंड वर्क कर रही है, रिवर भी अपना काम कर रही है, हर कोई अपना अपना काम करता है, ठीक है। तो टुडे वी विल डू वर्क ऑफ सी वेव्स। तो व्हेन सी वेव्स स्ट्राइक विद द रॉक्स, सी वेव्स रॉक्स के साथ जब टकराती हैं, एंड देन इरोडेड द रॉक्स, sea waves strike the rocks and eroded them. Hollow caves are formed. Due to this, hollow caves are formed known as sea caves. ये जैसे रॉक है, sea waves, ये waves है, what sea waves। अब इरोडेड किया इन्होंने, यहां से इरोजन हुई, इरोजन होके इतना पार्ट इरोड कर दिया, दिस पोर्शन, ये पोर्शन खाली है, इज इट क्लियर। अब ये ब्लैंक है बिकॉज यहाँ पे क्या हो गई, इरोजन, तो ये क्या बन गई, सी केव्स। दिस इज सी केव्स फॉर्म्ड बाय erosion. Sea waves strike the rocks and eroded the rocks. Due to this, sea caves are formed. यहाँ से erosion हो गई, इतना पोर्शन खाली, और यहाँ पे क्या बन गई, sea caves. Hollow caves are formed known as sea caves. When there is more erosion, क्योंकि उन्होंने तो erode करते रहना, that is their work. आपने शैतानी करते रहना, दैट इज योर वर्क। उन्होंने इरोजन करते रहना, दैट इज देयर वर्क, ठीक है ना। तो जैसे इरोजन और हो जानी है, कैविटीज जो हैं बिकम बिगर एंड ओनली रूफ ऑफ द रॉक इज लेफ्ट, दिस फॉर्म्ड सी आर्चेज। अब ये देखो, दिस इज द रॉक, अब पहले ये था इतना, अब ये और बड़ा हो गया, और ज्यादा मटेरियल इरोड हो गया, कैविटीज बिकम बिगर, इतना पीस इरोड हो गया, नो कैविटीज बिकम बिगर, तो दैट इज सी आर्चेज। सी आर्चेज आर फॉर्म्ड। जैसे जैसे इरोजन ज्यादा होती है, सी आर्चेज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट उसका वर्क क्या है, नेक्स्ट इज फर्दर इरोजन टुक प्लेस, नो ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, अब दोबारा इरोजन हो गई, एंड नो ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ ये पीस बच गया, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। फर्दर इरोजन, अब दोबारा इरोजन हो गई, एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, नो देयर इज नो रूफ, अब ये रूफ गायब हो गई, सब कुछ इरोजन हो गई सारे पार्ट में, ओनली दिस वन इज लेफ्ट, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेक्स, दैट इज कॉल्ड स्टेक्स। ओनली वॉल इज, वॉल जब रहेगी तो ये स्टेक्स बन गई। So this is the work of sea waves. Now is it clear? First is sea waves strike the rocks, caves are formed, hollow caves are formed known as sea caves, then cavities becomes bigger, over material erode हो गया यहाँ से, sea arches are formed, and then again erosion takes place, only walls are left, रूफ डिसअपेयर, रूफ सारी रोड हो गई,
तो स्टेक्स आर फॉर्म्ड, तो क्या बन गए स्टेक्स. So this is the work of sea waves. Sea caves are formed, arches are formed, and then stakes are formed. So next, steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. Sea cliff, steep rocky coast rising vertically above the sea water. Rising vertically above the sea water is called sea cliff. Sea waves also strike the beaches. अब हम आगे जाके करेंगे वर्क ऑफ आइस. तो बीचेस से भी टकराती हैं, इरोडेड देम, एंड देन व्हेन सी वेव्स विथड्रॉ कर देती हैं ना, जब बीचेस भी इसी से बनते हैं. सी वेव्स बीचेस भी बनाती हैं. आपने देखे हैं बीचेस? कभी गए हो मुंबई वाली साइड या किधर? ओके. तो वो बीचेस आर फॉर्म्ड. सी वेव्स स्ट्राइक द शोर, इरोडेड देम, एंड व्हेन दे विथड्रॉ, जब वो क्विट करती हैं, स्पीड कम हो जाती है, विथड्रॉ कर लेती हैं, दे डिपॉजिटेड द मटेरियल अलोंग द शोर, एंड फ्रॉम दैट मटेरियल बीचेस आर फॉर्म्ड. From that material beaches are formed. Sea waves strike the shore, and then when they withdraw, जब वो withdraw करती हैं, तो they, क्योंकि withdraw किया तो speed कम, they deposited the material along the shores, and from that material beaches are formed. It's not given in the book, but beaches भी sea waves ही बनाती हैं. ठीक है. Next is work of ice. No, slow moving rivers of ice. Slow moving river of ice is called glacier. First of all, you should know what's glacier. Slow moving river of ice is called glacier. बहुत slow चलती है ये river of ice, and it too erode the landscape. ये भी लैंडस्केप को इरोड करती है. स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस आल्सो इरोड द लैंडस्केप. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज. As the ice melts, they get filled up with water, and due to this, beautiful lakes are formed in the mountains. Beautiful lakes बन जाती हैं mountains में. Glaciers होते हैं, slow moving rivers of ice are called glaciers. They also erode the landscape, and they carve out deep hollows there. As the ice melt, जैसे ही वो ice melt होती है, they get filled up with water. In this way, beautiful lakes are formed in the mountains. तो वो ग्लेशियर से बनती हैं. नेक्स्ट इज eroded material such as big rocks. जो eroded material होता है, rocks, small rocks, sand, silt get deposited, and these deposits forms glacial moraines. इनसे क्या बन जाते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स. लिसन अगेन. स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स आल्सो इरोडेड द लैंडस्केप and carve deep hollows. When the ice melts, these hollows filled with water, and from this beautiful lakes are formed in the mountains. And material जो इनके साथ सेडिमेंट्स होते हैं, such as big rocks, small rocks, आप कह सकते हो sand, silt, they deposited, and from the deposited material glacial moraines are formed. From the eroded sediments glacial moraines are formed. How beautiful lakes are formed? Because glacier eroded the landscape, and
carve deep hollows, and when these deep hollows filled with water because ice melts, ग्लेशियर की जो आइस होती है जैसे ही वो मेल्ट होती रहती है, these hollows filled with water, and from this क्या बन जाती हैं? ब्यूटीफुल in the mountains. And eroded material जो ग्लेशियर्स के साथ होता है, for example big rocks, small rocks, sand, silt, they deposited, and from the deposited sediments glacial moraines are formed. Next is work of wind. It is an active agent that works in the desert area. Active agent of erosion and deposition. Active क्योंकि डेजर्ट्स में बच्चे पानी तो है नहीं, ना ही वहां पे ग्लेशियर्स हैं, तो एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन इन डेजर्ट एरियाज इज विंड. आपको पता है डेजर्ट एरियाज में डेली सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, ऑलमोस्ट डेली सैंडस्टॉर्म्स आते हैं. वहां पे सैंड ड्यून्स हैं. सैंड ड्यून्स पता है? स्मॉल हिल्स ऑफ sand dunes, and these sand dunes keep on shifting from one place to another. Listen again. Active agent of erosion and deposition in the desert areas is, बताओ क्या? Wind. Daily dust sandstorms occurs in desert areas. Daily आते हैं sandstorms. And first of all, तो जो wind होती है ना, that eroded the rocks. Rocks को erode करती है wind. Sandy rocks हैं वहाँ पे, and they are eroded by wind. Wind eroded the lower part of the rock. Is and upper part इतना ज़्यादा वो erode नहीं करती. Wind eroded only the lower part of the rock, and upper part इतना ज्यादा erode नहीं, जैसे ये rock है, ठीक है. तो wind eroded, मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ. For example, अब wind eroded only lower part erode हुआ, only lower part, and upper part ऐसे का ऐसा ही रह गया. Only lower part is eroded and upper part ऐसे ही रह गया, same. So look here, which type of rocks are formed here? Mushroom rocks. Look here, ये सारा material erode हो गया. Lower part get eroded, upper part is left. Wind eroded only the lower part of the rocks, upper part is left. And from this, which type of rocks are formed in the desert areas? Mushroom rocks are found in desert areas. अब ये पता चलेगा कैसे उसने सिर्फ lower part को erode, जैसे मैं अभी इसको करके दिखाती हूँ. Look here, ये है जैसे, only ये सारा है. अब एक मिनट, only lower part get eroded. देखना अभी कैसे होगा. ये हो गया, only lower बोला मैंने, ठीक है. और इधर से ये हो गया. So look here, which types of rocks are formed? Mushroom rocks are formed due to erosion. Now, wind carry with it sand from one place to another, and where it deposited the sand dunes are formed. Sand dunes are not permanent. They keep on shifting from one place to another. But if sand जो है, it has fine grains, light grains, अगर वो grains light हैं and fine grains हैं, then wind can carry the sand to far off places. तो उस sand को wind दूर जगहों पे लेके जा सकती है. If sand grains are light, अगर sand grains कैसे होंगे? Light,
and fine, then wind can carry those sand, that sand to far off places, दूर की जगहों पे लेके जा सकती है, because sand grains light है, so wind can carry it far off places and deposited there, and from that loess are formed. उससे क्या बन जाते हैं? loess, and loess are found in China. लोएस की एग्जाम्पल क्या है? चाइना. चाइना में क्या पाए जाते हैं? लोएस. लोएस आर फाउंड इन चाइना. कैसे बनते हैं लोएस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टिव एजेंट हो इरोजन एंड डेपोजिशन इन डेजर्ट एरिया इज विंड. विंड इरोडेड रॉक्स. Wind eroded the lower part of the rock, not the upper part, and from this mushroom rocks are formed. Then wind carry the sand from one place to another and deposited it, and from that sand dunes are formed. क्या बन जाते हैं? Sand dunes. When sand जो है that is fine and light, wind can carry it to far off places, and from that loess are formed. Where it deposited the light and fine sand, loess are formed, and these loess are found in China. ये loess कहाँ पे पाए जाते हैं? China में. So this is about the whole chapter. We have done the work of sea, work of sea waves, work of wind, work of glaciers, and work of rivers. Now the turn is of questions. Question answers. You will help me in doing the question answers. First is, how do the plates move? Yes, very good. Give answer. Very good. Very good. Very good. Clap for Argun. Why do plates move? Now listen. Plates move due to the movement of molten magma found in the interior of the earth. This answer is given by Hargun of your class. Now listen again. Plates move due to the movement of the molten magma found in the interior of the earth. Due to the movement in the molten magma found in the interior of the earth. अब आपको दोनों फोर्सेस बतानी है. एक्सोजेनिक, वेरी गुड. एक मिनट में पूछती हूँ. वेरी गुड. सबके हैंड्स अप हैं. What are exogenic and endogenic forces? So firstly, your name is Ananya will tell exogenic forces. Ananya, loudly बोलना ताकि बच्चों को आवाज जाए. Yes, very good. Wait. Gaurish and Savya, no, I know कि आपको भी आते हैं. Shubh, very good. I know कि आपको आंसर्स आते हैं, but एक मिनट, let her to speak. अनन्या को बोलने देते हैं. Very good. She is saying forces that work on the surface of the earth are called. Can you give example of this, Ananya? Very on the surface of the earth. Yes, she is giving correct answer. Give example, बच्चे. Loudly, speak loudly. Very good. She is right. आप इंडोजेनिक बताना. वेट. तो एक मिनट. अब इधर से भी मैं पूछूंगी. वेट. अब आएगी टर्न ऑनलाइन स्टूडेंट्स की. इज इट ओके? तो लेट हर टू स्पीक फर्स्टली. अनन्या ने जो आंसर दिया पहले आप वो देखो. आपको एक्सोजेनिक forces which act on the surface of the earth and cause changes. Forces which act on the surface of the earth and cause changes on the earth surface of the earth are called exogenic forces. Example: weathering, erosion, deposition. ये देखो, ये आउटसाइड हुआ ना, मशरूम रॉक बनी.
आउटसाइड चेंजेस हुए ना, ये भी आउटसाइड है, तो किससे हुआ ये सब कुछ, किसने किया था ये मशरूम रॉक, किसने बनाई, इरोजन से बनी, वेदरिंग से ये बनी, वेदरिंग हुई, फिर ये इरोडेड मटेरियल आगे चला गया तो सैंड ड्यून्स बने। वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन, डेपोजिशन से हम कहते हैं कि लुइस बने, लुइस। Weathering, erosion and deposition is an example of endogenic forces. Now the next answer I think Shubh will give. Shubh, I'm going to unmute you. You will tell endogenic forces. Shubh, I have unmuted you. Shubh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anji. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. Very good. Endogenic forces example. Give example. An example, earthquake, volcano, landslides. Good, very good. Clap for Shubh. Good. Forces. Thank you, ma'am. Forces which originates in the interior of the earth and cause changes. Forces which originates in the interior of the earth and cause changes called endogenic forces. Example, earthquake and volcano. Good. Next you, earthquake and volcano. Forces which act originates interior of the earth, inside the earth and cause changes known as endogenic forces. Example, earthquake and volcano. इतना तो क्लियर है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। ये गलत कर दिया तो यू विल गेट 0। व्हाट इज इरोजन? यस, योर नेम इज Jotin. Jotin will give answer. What is erosion? Good, very good. He has given correct answer. Topic is what is an erosion? Wearing away of, एक मिनट इधर से भी पूछ लेते हैं, हैंड्स अप बहुत ज्यादा है। साविया विल गिव आंसर। वेरी गुड, क्लैप फॉर ज्योतिन एंड नाउ साविया विल रिपीट इट। साविया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, नहीं तो इन बच्चों ने कहना हमसे पूछे नहीं। Saviya, it's your turn. Be quick. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The removal of sand from the surface. Yes, ma'am. The removal of sand from the surface of earth is called erosion. The removal of, दोबारा बोलो। The removal of sand from the surface of earth is known as erosion. Good. ये भी correct है। आप कह सकते हो wearing away of landscape. Very good. Clap for Saviya also. Wearing away of landscape by different agents. Wearing away of landscape by different agents like water, wind and ice is called erosion. Is it clear? Next. How are floodplains formed? फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? वेरी गुड। क्लास में सब बच्चों के हैंड्स अप हैं, घर पे भी सबके हैंड्स अप हैं। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। योर नेम इज Sarang. Sarang will give answer of this question. Now listen students, how flood plains are formed. And from this, floodplains are formed. Yes, take a minute. Gorish, yes, give answer. He has given correct answer. Sarang has given correct answer. Now your turn also, Gorish. Be quick. Yes, ma'am. When a river overflows its bank, it results in the flooding of the area surrounding it. When the floods,
When floods occur, it deposits a layer of fine soil and other material called sediments, thus forming a fertile layer of land called And from floodplains. that, floodplains are formed. Very good. Now do this question. During rains, river overflow their banks. During rains, river overflow their banks. During rains, rivers over. Ma'am, your voice is cracking. Oh, Yes, ma'am. I'm trying again. Your voice is not During audible. एक minute. Now is it clear? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. During rains, rivers overflow their banks. This leads to floods. During rains, river overflow their banks. This leads to floods. When floods move back, अब वाटर ने क्विट किया, वापस जा रहा है. When floods, उसकी पावर खत्म. When floods move back, layer of material is deposited over the plain. Layer of material is deposited over the plain in the form of sediments. Layer of material is deposited on the plain in the form of sediments. This leads to the formation of floodplains. Now listen again. When rains, during rains, rivers overflow their banks. During rains, rivers overflow their banks. This leads to floods. When floods move back, जब move back करते हैं, when floods move back, layer of material is deposited over the plain in the form of sediments. This leads to the formation of floodplains. Next is, what are sand dunes? अभी किया, small hills of sand are called sand dunes and they keep on shifting. इतना सा लिख दो बस and draw diagram also. Small hills of sand are called sand dunes and they keep on shifting. Next, how are beaches formed? मैंने अभी बताया था, how are beaches formed? It's a work of sea waves. पता है ना? How are beaches formed? Yes, sea waves strike the coast. Sea waves किससे टकराती हैं? Coast. They erode the coast. Sea waves strike the coast. Points में करोगे then it will be good. Sea waves strike the coast. They erode the coast and carry the eroded material such as sand and silt with them. Sea waves strike the coast. They eroded them and carry with them sand and silt. When these waves withdraw, जब जैसे फ्लड मैंने बोला फ्लड्स मूव बैक, तो वेव्स भी तो विथड्रॉ होंगी. When these waves withdraw, they deposit the material along the shore. And from this, beaches are formed. Listen again. Sea waves strike the coast. They erode the coast and carry with them sand and silt. When these sea waves withdraw, they deposited the material along the shore. And from this, beaches are formed. Next is, what are oxbow lakes? ये देखो मैंने कल बनाई थी जो oxbow lake.
Oxbow Lake. Still water lake, U-shaped lake, है ना? चलो इसको हम करते हैं पहले. When meander loop is cut off from the main river, when meander loop is cut off from the main river, it forms a cut-off lake. When meander loop is cut off from the main river, it forms a which lake? Cut-off. It forms a cut-off lake. Cut-off lake known as Oxbow Lake. It is also known as still water lake. It is a still water lake and U-shaped. It is a still water lake and U-shaped lake. When meander loops cut off from the main river, cut-off lakes are formed, known as Oxbow Lake. These are still water lake and U-shaped lake. Is it clear? But do these question answers in your homework copy. Try to do these question answers and try to solve exercises also. Yes, किसने कुछ पूछना है जल्दी बोलो. यस मैम. मैम हमने जो क्वेश्चंस के साथ हमने जो डायग्राम्स आपने करवाए हैं हमने वो ड्रॉ करने हैं. Yes, if you can draw, it's very good. ओके मैम.